So last lecture but we have completed about the measures of dispersion. Buddy. And today but we are going to start with a new topic, buddy, which has been called to be as probability and probability distribution. Buddy. Just a minute. You people have got your notes. Buddy. उसमें स्टार्टिंग में देखो बड़ा तुम लोग को थियरी मिलेगा उसका तो स्टार्टिंग जो पार्ट है बड़ा it is based upon the theory only. Starting is based upon the theory. When we start with the chapter, in that chapter, first we will have to be prepared with the fundamentals of the term probability. Once all these terms, when it will get clear, you will be in a position to start with the sums. रिग्रेशन बट अभी नहीं होगा रिग्रेशन अभी नहीं होगा विल सी लास्ट पहले जो मेरे टॉपिक्स है ना मैं पहले वो कंप्लीट कर दूंगा फिर उसके बाद फिर देखेंगे कैसा सिलेबस कैसा करोगे So my screen is visible. It is very clear, no? एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है सब तुम लोगों को
So when we are going to start with this new term, which has been called to be as probability, but in that case, it is compulsory. Okay, each and every student, they should know when we are going to start with this term probability. So, sir, we want to know what is the meaning of the term probability is. What is the meaning of the term probability is? So, when we talk about the meaning of the term probability, in that case, we know that the term probability, it means it is a chance. The meaning of the term probability is the chance, or in other words, it is called to be as most likely. First of all, each and every student, they should know when we are going to start with any of the new topic, with respect to that new chapter, you should know the meaning of that chapter. When we have started studying about the term probability, probability. So what is the meaning of the term probability means? Probability means it is a chance or it is a most likelihood. So the topic of which we have started studying today, it is one of the such important topic which we use in our day-to-day life. But at the time of using with the fundamentals of the term probability, we are not aware that we are using the fundamentals of probability. हम लोग डे टू डे लाइफ में बड़ा बाय नोइंगली अननोइंगली बड़ा हम लोग यूज तो कर देते हैं बट हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग वहां पे प्रोबेबिलिटी यूज करते हो। अब यही देखो ना बड़ा, मैंने जो तुम लोग को मीनिंग बताया, मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोबेबिलिटी, तो उसमें मैंने तुम लोग को क्या बोला बड़ा? द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोबेबिलिटी इज चांस, और इन अदर वर्ड्स बड़ा इट इज मोस्ट लाइकली। ये दो वर्ड्स ऐसे कॉमन वर्ड्स है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो। ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस है ना होते हो गए बड़े जिसमें हम लोग ये दो वर्ड को बड़ा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ा कि वाइल वॉचिंग विद द गेम क्रिकेट बड़ा है कि यूजुअली बड़ा वी पास अ सेंटेंस, वी पास अ सेंटेंस, देयर इज अ चांस इंडिया कैन विन द मैच। बोलते क्या नहीं बोलता, बोलते क्या नहीं बोल रहे? तो इन दैट सेंटेंस you are showing the possibilities of India winning a match, है कि नहीं? बट वो सेंटेंस जब बड़ा तुम लोग यूज करते हो तो क्या तुम लोग को पता चलता है बड़ा कि वो सेंटेंस में तुम लोग ने बड़ा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे प्रोबेबिलिटी यूज किया है। नेक्स्ट, आफ्टर appearing from the exam, usually but you pass a sentence most likely this time I will get 85% marks. तो इसका मतलब in that sentence also you are showing the possibilities of getting 85% of marks. पर क्या पता है कि तुम लोग ने बड़ा वो सेंटेंस में भी प्रोबेबिलिटी को बड़ा यूज किया हुआ है? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को? By saying the weather conditions, many times we pass a sentence, we pass the sentence, most likely today there will be a rainfall. In that you are showing again the possibilities. You are talking about the chance of getting a rainfall. In that also you are using the fundamentals of probability. अच्छा मुझे बताओ बड़ा, how many of the students watch IPL बड़ा?
अच्छा, तो आईपीएल बड़ा देखने के टाइम तुम लोग बड़ा टीवी स्क्रीन के ऊपर विन प्रेडिक्शन देखते हो, विन प्रेडिक्शन वहां पे पाई डायग्राम जैसा बड़ा विन प्रेडिक्शन दिखा दे वहां पे, in which they show the percentage of Mumbai Indian winning the match and the percentage of the opponent team winning the match, देखते हो? और वो हर एक ओवर के बाद या विकेट गिरने के बाद या कुछ रन स्कोर होने के बाद बड़ा वो परसेंटेज जो है वो चेंज होते रहता है बड़ा, देखते हो कि नहीं देखते हो? तो ये जो विन प्रेडिक्शन जो तुम लोग देखते हो कि व्हाट इज अ चांस ऑफ मुंबई इंडियन विनिंग अ मैच, what is the chance of the opponent team winning the match, वो क्या है, what is that, क्या है वो ये, what is that win prediction is, but it is none other than it is a probability. Yes, it is a probability which you are using over there. बट खाली टीवी देखने के टाइम पर हम लोग नॉर्मली बस वो टीवी देखते रहते हैं, है कि नहीं, और बस खुश होते रहते हैं, हाँ हाँ मुंबई इंडियन जीत जाएगा, मुंबई इंडियन जीत जाएगा, बराबर है, दैट्स ट्रू, बट वो पता कैसे चला तुम लोग को? बाय यूजिंग the fundamentals of probability. Next, after knowing the meaning of the term probability, after knowing the meaning of the term probability, everyone should know about its origin. Everyone should know about its origin. How this term probability it came into existence. The answer to that question is the term probability. The term probability it has been originated or it came into existence from the playing of games. The term probability it came into पढ़ाई के existence. लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Existence from the playing of the games. From the playing of the games. So you people might be thinking that कि सर ऐसे कौन से गेम्स थे जिसको खेलने से ये जो टर्म प्रोबेबिलिटी है वो एग्जिस्ट हुआ। तो लेट वी स्टार्ट वन बाय वन विद ऑल द एग्जांपल्स। व्हेन वी स्टार्ट विद द गेम क्रिकेट बराबर। तो बिफोर बड़ा वी स्टार्ट विद द गेम क्रिकेट व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं बड़ा पहले बिफोर करेक्ट वी टॉस अ कॉइन बड़ा। तो समझ जाओ कि फ्रॉम द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन बड़ा, फ्रॉम द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन बड़ा, the term probability it came into existence from the tossing of a coin.
The term probability it came into existence next while playing some of the indoor games. We always roll a die. Correct? Die use करते कि नहीं? In some games we use one die, whereas in some games we use two dice. So from the rolling of a die, from the rolling of a die, the term probability it came into existence, and while playing with the cards, while playing with the cards in some of the games, we try to select the cards. We try to select the cards. So from the selection of a card, from the selection of a card, the term probability it came into existence. So basically, the term probability it came into existence from the playing of games, from the playing of games. And I told you which were that games. If you want to write, you can keep on writing about that games. Note कर लिया बेटा सब लोग ने? So you people might be thinking that, sir, from playing such type of games, how this probability it came into existence. So see here, I will explain. When we toss a coin, correct? When we toss a coin, at that time, always there is a one question in our mind. That is, when a coin is tossed, what is the chance in which the uppermost face of a coin will show a head or it will show a tail? बोल दिमाग ऐसा सब क्वेश्चन सोचता है कि नहीं सोचता है? दिमाग जो है बड़ा ऐसा क्वेश्चन सोचता है कि नहीं सोचता है? आंसर दो मुझे फटाफट. When a die when it is been rolled, at that time again we have a doubt. What is the chance in which the number which has been shown by the uppermost face of a die, it will be a perfect square, or it will be an even number, or it will be an odd number, or it will be a prime number? सोचता है कि नहीं सोचता है? सोचता है. When a card when it is being selected, when a card when it is being selected, at that time again there is a question, what is the chance in which the card which has been selected, it will be a red card, or it will be a black card, or it will be the card of heart, diamond, clubs, spades. बोल ये सब दिमाग सोचता है कि नहीं सोचता है? बड़ा सब ऐसे सब क्वेश्चंस बड़ा दिमाग में आता है कि नहीं आता है? आता है. In order to answer such type of questions, it became necessary for the mathematicians to introduce the term probability. Probability, when it came into existence, probability, when it came into existence. So earlier, it was the branch of mathematics
है ना. Earlier bro, it was the branch of mathematics, but later on became later on bro, it became bro, the branch of statistics bro. Earlier it was a branch of mathematics, but later on it became the branch of statistics. Screen is visible to you. तुम लोग मुझे बताओ कि फर्स्ट टाइम तुम लोग ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर बताओ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तुम लोग ने फर्स्ट टाइम. You have studied the chapter probability first time in 10th standard. But up till 10th standard, the chapter probability you have studied in algebra, because till 10th standard your subject it was been divided in two parts, algebra and geometry. It was not possible to include probability in geometry. Therefore, you have studied algebra. After 10th standard, when you came to FIGC, so in 11th standard, 12th standard, you have seen that your subject was divided in two parts, section 1 and section 2. Section 1, it was comprising of mathematics. Section 2, it was comprising of statistics. Math students ने ये टॉपिक probability 11th में भी पढ़ा, 12th में भी यूज किया. Yes or no? और वही प्रोबेबिलिटी को पढ़ा गया है किस में, सेक्शन 2 में और सेक्शन 2 किसके ऊपर बेस्ड था, सेक्शन 2 जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, इट वाज बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स राइट. अच्छा, ये सेम टॉपिक यू विल बी स्टडीइंग इन एफ5 बिकॉम सेम 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 पूरा डिटो टू डिटो सेम टॉपिक यू विल बी स्टडीइंग. But again, the same topic, you will be studying in statistics, not in mathematics. And even in CA foundation also, you are studying the chapter probability, not in mathematics, but in statistics. Correct. The term probability, the concept of probability, it was being introduced. It was being introduced by a great mathematician named Pascal. Pascal nahi, Pascal. It was being introduced by a great mathematician, Pascal. And there was one more mathematician who has given his contribution, was named as Thales. Pascal and Thales. These were the two persons who have introduced the term probability in mathematics. And now, after giving the historical background of the term probability, again, let me discuss what are the questions which can be asked by the institute.
what kind of questions it can be asked? बराबर सब लोग ध्यान से सुनो bro. Number one, bro. सब लोग ध्यान से सुनो. Number one, bro. Earlier, the probability, it was the branch of option A, physics, option B, bro, chemistry, option C, mathematics, option D, statistics.